पेज नंबर 3rd चैप्टर शुरू करने वाले थे, क्रेविंग। मैम 3rd चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका था। ओके पेज नंबर याद नहीं आप लोगों को, तो डायरेक्ट पेज नंबर पे पहुंच जाते हैं। पेज नंबर याद रखा करें, तो स्क्रॉल करके देखना होता है किधर। गोल्डन रूल ऑफ हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन, ओके यही है। टोनी डंगी, इन्हीं का चर्चा हो रहा था। ये यहाँ तक हो गया था। यस, यहाँ तक ही हो रहा था। फर्स्ट पारा हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे बात हो रही है नेशनल फुटबॉल लीग के बारे में। और टोनी डंगी की टीम अब तक की वर्स्ट टीम थी, कंटिन्यूस हारे जा रही थी। ठीक है, ये चर्चा अब तक हुआ है। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। शुरू करिए ज्योति, आप ही शुरू करिए। यस मैम। Tony Dungy had waited. Tony Dungy had waited an eternity for this job. For 17 years, he prolonged the sidelines as an assistant coach, first at the University of Minnesota, then with the Pittsburgh Steelers, then the Kansas City Chiefs, and then back to Minnesota with the Vikings. For times in the past decades, he had been invited to interview for head coaching position with NFL teams. Okay, what do you mean by All 4 times. एक पारा हो गया, अब इसका मतलब बताइए। यहाँ टोनी डंगी के बारे में बताया जा, क्या हुआ, ये पैराग्राफ का मतलब क्या हुआ? What have you understood from this? Anyone can say? टोनी डंगी इस पर्टिकुलर जॉब के लिए काफी दिनों से वेट कर रहे थे, मतलब फॉर लॉन्ग टाइम वेटिंग एन इटर्निटी फॉर दिस जॉब। मतलब क्या हो, काफी लंबे समय से इस जॉब के लिए वो वेट कर रहे थे। इससे पहले इनके जॉब के बारे में डिटेल दिया गया है। फॉर 17 years ही प्रोवेल्ड द साइडलाइंस एज एन असिस्टेंट कोच, यानी पहले वो असिस्टेंट कोच की तरह काम कर रहे थे। फर्स्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, देन विथ पिट्सबर्ग स्टीलर्स एंड देन कांसास सिटी। इनके जॉब का पूरा वर्णन दिया हुआ है। 4 times in past decade he had been invited to interview for head coaching position। ठीक है, कुछ लगभग 4 बार इन लोगों को हेड कोचिंग पोजीशन के लिए इंटरव्यू किया गया है। अब फाइनली तब जाकर के इनको ये डेजिग्नेशन मिला था, बट कंडीशन मतलब ऑलमोस्ट फेलियर ईच एंड एवरी टाइम। देन व्हाट हैपेंड, चलिए। All 4 times, the interview hadn't gone well. Part of the problem was Dungy's coaching philosophy. In his job interview, he would patiently explain his belief that the key to winning was changing players' habits. He wanted to get players to stop making so many decisions during game. He said he wanted them to react automatically, habitually. If he could instill the right habits, his team would win periods. Champions don't do extraordinary things. एक मिनट, यहाँ पे बताया गया कि डेंगी का जो कोचिंग फिलॉसफी था वो डिफरेंट था। वो चाहते थे कि ऑलमोस्ट हैबिट में इनकलकेट हो जाए उनका प्लेइंग का, जितने टीम मेंबर्स हैं वो सोच करके ना खेले, बल्कि ऐसे प्रैक्टिस करते करते हैबिचुएटेड हो जाए, वो ऑटोमेटिकली डिसीजन ले। ठीक है, वो ये इनका फिलॉसफी था। हाँ, प्रोसीड ना। Champions don't do extraordinary things. Dungy would explain they do ordinary things, but they do them without thinking. Too fast for the other team to react. They follow the habits they have learned. How the owners would ask, are you going to create those new habits? Oh no, he wasn't going to create new habits. Dungy would answer, players spend their life building the habit. आप म्यूट हैं ज्योति। ज्योति, कैन यू हियर मी? म्यूट हैं आप। Sorry, ma'am. Oh no, he wasn't going to create. Yeah, ma'am. Oh no, he wasn't going to create new habits. Dungy would answer. Players spend their lives building the habits that got them to the NFL. No athlete is going to abandon those patterns simply because some new coach says to.
So rather than creating new habits, Dungy was going to change players' old one. And the secret to changing old habit was using what was already inside players' heads. Habits are three-step loop: the routine, and the reward. But Dungy only wanted to attack the middle step, the routine. He knew from experience that it was easier to convince someone to adopt a new behavior if there was something familiar at the beginning and end. ओके, हैव यू अंडरस्टूड? तो इससे पहले हैबिट लूप सब में हम लोग क्या देखे, बस 3 ही स्टेप है हैबिट फॉर्मेशन का, क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। अब यहाँ बात हो रही है कि अगर हमको हैबिट चेंज अगर करना है, यहाँ पे क्या जो चैप्टर का नाम है क्या है, व्हाई ट्रांसफॉर्मेशन अकर, है ना। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, यानी चेंज की बात हो रही है ना। तो चेंज करने के लिए पहले के जो कोच हैं, उनको जो ट्रेन किए हैं, उससे वो बाहर निकल नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि डंगी ने सोचा कि वो मिडिल पार्ट को अटैक करेंगे, दैट इज रूटीन पार्ट को। तो वो आपका जो क्यू है वो भी अनटच्ड रहेगा, रिवॉर्ड जो है वो भी अनटच्ड रहेगा। ओके, कहाँ गए भाई? यही है ना मिडिल रूटीन बिहेवियर। ओके, स्टार्ट फ्रॉम हियर। Now his coaching strategies. होल्ड ऑन, कोई और पढ़े यहाँ से, हिज कोचिंग स्ट्रेटजी। ऋतु, ऋतु प्रियदर्शी, ऋतु, कैन यू हियर मी? 69 roll number. Ma'am, yes, ma'am. Read from His here. coaching strategy, yes, ma'am. His coaching strategy involved an axiom, a golden rule of habit change that the study after study has shown is among the most powerful tools for creating changes. Dungy recognized that you can never truly extinguish bad habits. Rather, to change the habit, you must keep the old cue and deliver the old reward, but insert a new routine. That's the rule. If you use the same clue and provide same reward, you can shift the routine and change the habit. Almost any behavior can be transformed if the cue and reward stay the same. The golden rule has influenced treatment for alcoholism, obsessive compulsive disorder, and hundreds of other destructive behaviors, and understanding it can help anyone change their own habit. Attempts to give up snacking, for instance, will often fail unless there are new routine to satisfy old cues and reward argues. A smoker usually cannot quit unless she finds some activity to replace cigarettes when her nicotine craving is triggered. 4 times Dungy explained his habit-based philosophy to team owners. 4 times they listened politely, thanked him for his time, and then hired someone else. Then, in 1996, the waffle buccaneers called Dungy flew to Tampa Bay and once again laid out his plan for how they could win. The day after the final interview, they offered him the job. Read this also. You can't extinguish a bad habit, you can only change it. Okay, यानी इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं कि बैड हैबिट से कैसे हम लोग निजात पा सकते हैं। ठीक है, क्या ऐसा करें? ऑब्वियसली ये डंगी ने एक चीज रिकॉग्नाइज किया कि यहाँ पे कोई भी चीज अगर चेंज करना है तो हमें क्यू और रिवॉर्ड एज इट इज रखना होगा और रूटीन को चेंज करना पड़ेगा। कैसे कैसे, ये आगे देखिए। अब कोई और पढ़िए, प्रियंका। Yes, ma'am. Ma'am, Dungy's system would say, na?
Dungy's system would eventually turn the Bucks into one of the league's winningest teams. He would become the only coach in NFL history to reach the playoffs in 10 consecutive years, the first African American coach to win a Super Bowl, and one of the most respected figures in professional athletes. His coaching techniques would spread throughout the league and all of sports. His approach would help illuminate how to remake the habits in anyone's life. But all of that would come later. Today in San Diego, Dungy just wanted to win. From the sidelines, Dungy looks up at the clock, 8:19 remaining. The Bucks have been behind all team and have squandered opportunity after opportunity in typical fashion. If their defense does not make something happen right now, this game will effectively be over. San Diego has the ball on their own 30-yard line, and the Chargers quarterback, Stan Humphries, is preparing to lead a drive that he hopes will put the game away. The play clock begins, and Humphries is poised to take the snap. But Dungy isn't looking at Humphries. Instead, he is watching his own players align into a formation they have spent months perfecting. Traditionally, football is a game of feints and counterfeints, tricks, play, and misdirection. Coaches with the thickest playbooks and most complicated schemes usually win. Dungy, however, has taken the opposite approach. He isn't interested in complication or obfuscation. When Dungy's defensive players lines up, it is obvious to everyone exactly which play they are going to use. Dungy has opted for this approach because in theory, he doesn't need misdirection. He simply needs his team to be faster than everyone else. In football, milliseconds matter. So instead of teaching his players hundreds of formations, he has taught them only a handful, but they have practiced over and over until the behaviors are automatic. When his strategy works, his players can move with a speed that is impossible to overcome. But only when it works. If his players think too much or hesitate or second guess their instincts, the system falls apart. And so far, Dungy's players have been a mess. This time, however, as the Bucks line up on the 20-yard line, something is different. Take Regan Upshaw, a Buccaneer defensive end who has settled into a three-point stance on the scrimmage line. Instead of looking up and down the line, trying to observe as much information as possible, Upshaw is looking only at the cues and that Dungy taught him to focus on. First, he glances at the outside foot of the foot line. His toes are back, which it means he step backward and block like the quarterback passes. Rotated. hold down. लाइन डिस्टर्ब जा रहा है क्या अचानक से? टीवी वगैरह चल रहा है क्या? विश्वनाथ भाई के साथ है, 5 लोगों को जलाने का ऑर्डर भी विश्वनाथ ने दिया। उस भाई के खिलाफ पड़ताल तेरी गलती है। पहले तूने मुझे मार डाला ना, तो तू भी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं बचेगा। कैसी सच्चाई? आपको फोन लगाओ, मुझसे बात करा। लेकिन जी, अरे तुम फोन लगा के थे मुझे। है कौन ये? Okay, read someone else. Ankit Kumar, roll 50. मैं reading सही था. हाँ. Ankit Kumar, can you hear me? मैम कहाँ से पढ़ना है? यहाँ जहाँ पे अब टेक्निक देखा जा रहा है कि लोग कैसे खेल रहे हैं. अब तक क्या बात हुई कि डंगी ने अपने सारे प्लेयर्स को फोकस करवाया
कि आप अपोजिट टीम लोग कैसे खेलेगा, जो पहले से वो लोग पकड़ ले कि अब ये लोग क्या करने वाला है, वही तरीका यहाँ से बताया जा रहा था. फर्स्ट ही ग्लैंस्ड एट द आउटसाइड फुट. रीड फ्रॉम हियर. मैम First 3 glance पॉइंट at स्टांस का मतलब क्या हुआ मैम? 3 पॉइंट स्टांस ऑन द स्क्रीमेज लाइन, इसका हिंदी किधर पढ़ रहे हैं आप, दिखाइए पेज नंबर. मैम ऊपर मैम. 3 पॉइंट स्टांस ये गेम का कोई सर्टेन लाइन है, उसके बारे में बताया जा रहा है. अच्छा मैम. अब टॉप प्लेयर है बैकिनियर्स का डिफेंसिव एंड हु हैज सेटल इनटू अ 3 पॉइंट स्टैंस. उसका जो एक लाइन का जो दूरी है, उसके उस दूरी में ये लोग खड़े हैं. ठीक है. ओ, और इंस्टेड ऑफ या लुकिंग मैम. अप एंड डाउन द लाइन ट्राइंग टू ऑब्जर्व एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल. इतने डिस्टेंस पे खड़े होके वो बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, जितना इंफॉर्मेशन वो गेन कर सकते हैं दूसरे प्लेयर को देख करके वो ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है. ओके मैम. चलो यहाँ से पढ़िए. first, first he glanced at the outside foot of the opposite lineman. His toes are back, which means he is preparing to step backward and block will be quarterback passes. Next, Upsaw looks at the lineman's shoulders rotated slightly inward, and the space between him and the next player a fraction narrower than expected. Upsaw has part, persisted how to react to each of these cause so many times that at this point he does not have to think about what to do. He just follow his habits. आवाज रही है मैम? आ रही है लेकिन बहुत मिस्टेक पड़े. लाइक प्रैक्टिस चाहिए. ओके मैम. Use सन it. ठीक है. हेलो, क्या हुआ, आवाज नहीं गई क्या? आवाज आई. सन Diago's quarterback approaches the line of scrimmage and glance right, then left, breaks the count and takes the ball. He drops Marks back the 5 count. steps and stands tall, swiveling has his head, looking for an open receiver. There, 3 seconds have passed since the play started. The stadium's eyes and the television cameras are on him. So most observers fail to see what happening among the corners. As soon as Humphries took the snap, Upshaw sprang into action. Within the first second of the play, he darted right across the line of scrimmage so fast the offensive lineman could not block him. Within the next second, Upshaw ran 4 more paces downfield. His steps as blurred in the next second. Upshaw moved 3 streets closer to the quarterback, his path impossible for the offensive lineman to predict. As the play as the play moves into its 4th second, Humphries, the San Diego quarterback, is suddenly Suddenly exploded. suddenly exposed. He क्या? He He hesitates. hesitates his upsaw from the corner of his eye and watch when Humphries makes his mistake. He starts thinking. Humphries spots a Stop. teammate. हो गया. अब रुक जाए मैम. हाँ, अब कोई और पढ़िए. अपूर्वा. अपूर्वा. रविराज. यस मैम. पढ़िए यहाँ से. मैम कहाँ से? यहाँ जहाँ कर्सर मूव हो रहा है. Humphries spots a teammate. Humphries spot a एक बार team. देख लीजिए कितना बड़ा है. यहाँ तक है, यहाँ तक आज कर लेते हैं, उसके बाद बात करें. ठीक है. Humphries, ओके मैम. शुरू करिए. हाँ यस मैम, स्टार्ट करते हैं. हम spots a teammate, a rookie tight and named
Brian Roche 20 yards downfield. There's another San Diego. Diego क्या पढ़ते हैं? Daigo receiver much closer, waving his arms, calling for the ball. The short pass is the safe choice. Instead, Humphreys, under pressure, performs a split second analysis, cocks his arm, and haps to Roche. That hurried decision is precisely what इसको ठीक से पढ़िएगा, क्या मैम? इसको थोड़ा ठीक से पढ़िए दोबारा. That hurried तो फिर hurried decision is precisely. hurried पहले पढ़े थे. चलिए आगे बढ़िए. Yes ma'am, that मैम सही पढ़े ना? hurried pronunciation सही क्या? वही सही है. Yeah ma'am, that hurried decision is precisely what Dungy की Dungy ma'am, Dungy क्या ma'am? Dungy was hoping for. Dungy, अच्छा, oh ma'am, what Dungy was hoping for. As soon as the ball is in the air, a Buccaneer. A Buccaneer safety named John Lynch starts moving. Lynch's job was straightforward. When the play started, he ran to a particular point on the field and waited for his cue. There's enormous pressure to improvise in this situation, but Dungy has drilled Lynch until his routine is automatic, and as a result, when the ball leaves the quarterback's hands, Lynch is standing 10 yards from Roach waiting. As the ball spins through the air, Lynch read his cues, the direction of the quarterback's face mask and hands, the spacing of the receivers. Good morning, ma'am. And starts moving. अभी good morning बोलने वाले कौन है? Okay, finish it. As the ball spins through the air. And starts moving before it's clear where the ball will land. Roach की मैम की रोच है मैम, Roach, the San Diego receiver, springs forward, but Lynch cuts around him and intercepts the pass before Roach can react. Lynch takes off down the field towards the Charger end zone. The other Buccaneers are perfectly positioned to clear his route. Lynch runs 10, then 15, then 20, then almost 25 yards before he is finally pushed out of bounds. The entire play has taken less than 10 seconds. 2 minutes later, the Bucks. The short है Bucks. Oh, अच्छा short form है यार. अच्छा मैम. The Bucks score a touchdown, taking the lead for the first time all game. 5 minutes later, they kick a field goal in between. Dungy defense shuts down each of San Diego's comeback attempts. The Buccaneers win 25-17, one of the biggest upsets of the season. At the end of the game, Lynch and Dungy exit the field together. Exit यानी छोड़ दिया field. Exit the field together. It feels like something was different out there, Lynch says as they walk into the tunnel.
We are starting to believe, Dungy replies. ओके यानी अब ये पूरा पहले गेम का डिस्क्रिप्शन है, तो जो फुटबॉल जानते हैं कैसे खेला जाता है, ये सारा चीज समझ रहे होंगे, कैसे पास हो रहा है, कैसे इंटरसेप्ट हो रहा है पास, तो पूरा ये गेम का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ कि ऐसे खेला, ये पोजीशन देखा, फाइन। और उसके बाद एट द एंड कि वो जीत गया और अब आगे, और ये कुछ और अगेन डिफरेंट स्टार्ट है। डंगी वाला एपिसोड यहाँ खत्म हो रहा है। Yeah, ये है, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, यहाँ से किसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। yes, चलिए ma'am. आज के लिए इतना ही, अटेंडेंस दे दीजिए Thank you, ma'am. और होली एंजॉय करिए। Okay, response to your roll number. Roll number 1. Yes, ma'am. Roll number 1. 2, 3, Yes, ma'am. 3. 4, Yes, ma'am. 4. 5, Yes, ma'am. 5. 6, Yes, ma'am. 6. 7, Yes, ma'am. 8, Yes, ma'am. 9, Present, ma'am. 9. 10, 11, 12, 13, 14, Yes, ma'am. 14. 15, Present, ma'am. 15. 16, 17, Present, ma'am. 18, Present, ma'am. ये गंदा से मत करी मेरे गंदा से ना नया तो दुआ चिल्ली सब कर दो जिसका भी आवाज आ रहा है म्यूट रखिए। 18, खाए लगे अरे ये देखिए ना टॉर्च बार का मैम अमन है। टॉर्च बार इतने पुराने हो गए आप लोग, क्लास करते हैं, ऑडियो को पता ही नहीं चलता है क्या? सॉरी मैम 19, Yes, ma'am. 19. हाँ Yes, ma'am. 19. present. 18, ओके 19 हो गया। 20, 21, Ma'am 18. मैम 21 18 हो चुका है। 22, 23, 24, 25, 26, Ma'am, 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, Yes, ma'am. 35. 36, 37, 36 present, ma'am. 37, 38, 39, Yes, ma'am. 38. 39 present, ma'am. 40, 41, Okay, ma'am. 38. Ma'am, 41. 42, Present, ma'am. 42. 43, 44, 45, Yes, ma'am. 44. 45, 46, Yes, ma'am. 45. 46, ma'am. 47,
48, 49, 50. 48, ma'am. 50, ma'am. Okay, 51 हो गया. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Present, ma'am. 62. Yes, ma'am. 65. Okay, 66, Ma'am. 67 65, ma'am. हो गया Excuse है. me, ma'am. 62 हो गया, ma'am. हो गया है. Thank you, ma'am. 68, 69, 70. No. Yes, ma'am. 70. 71, 72, 73, मैम 72 73, 74, 23 नेटवर्क इशू की वजह से लीव हो गया. 74, 75, 76, 70, बहुत network issue. 78, 79, 80, 81, 82, 82, ma'am. 83, 84, 83, ma'am. Present. 84, 85, 86, 87, 88, 89, 88, 89, 90, 91, 90, Ma'am, 91. 92, 93, 94. 93, ma'am. Okay, 95, 96, 90. 96, ma'am. Okay, Ma'am, 97. 95. 95. Okay, 97, 98, 99, 100, Yes, ma'am. 100. 101, Yes, ma'am. 101, ma'am. 103, 104, 105. हो गया. मैम 58, 12 छूट गया मैम. 12, Ma'am, 10. 10, 12, and who is raising hand? 58 and 76. हर्ष राज तो हो गया है. 76. अच्छा, और हर्ष है क्या? चलिए, done everyone. Then thank you. See you next